Morning, gentlemen. Today, in our series of learning from quotes, we will discuss about the enthusiasm. The need of enthusiasm in our lives. Now, Dr. Ambedkar had said, if there is no enthusiasm, the life becomes drudgery, a mere burden to be dragged. Nothing can be achieved if there is no enthusiasm. Enthusiasm matlab josh. Someone said, if you have no enthusiasm in you, your life will not be steered through in a good direction. अगर जिंदगी में एंथुजियाज्म नहीं है तो आपका जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा. Your life will miss its destined station. वो जो स्टेशन पे हम जाना चाहते हैं वो मिस हो जाएगा. It is the enthusiasm, that josh, that moves the vehicle of a fulfilled life. So, enthusiasm और या जोश हम कहें वो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है. Now it's all interconnected. How can one have determination if one does not have enthusiasm? How can one have motivation unless there is no enthusiasm? So remember folks, enthusiasm is the electricity of life. बिजली है हमारे जीवन की. And it is this electricity that gives us the drive to do things better. Enthusiasm has got nothing to do with motivational theories of, needs, hierarchy of needs and all that. Now some may say that hopelessness can lead to lack of enthusiasm. But then let's not forget another quote of Winston Churchill, who said, success is all about moving from one failure to another with enthusiasm. अर्थात सक्सेस कब मिलती है? जब हम एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ मार्च करते हैं विद एंथुजियाज्म. बीच में सक्सेस मिलती रहती, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट एंथुजियाज्म कि फेल हो गए फिर भी जोश से लगे हुए हैं. सो वन शुड लर्न हाउ टू कीप दिस एंथुजियाज्म परमानेंट इन लाइफ. हाउ कैन वी हैव दिस एंथुजियाज्म? क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? सक्सेस इज अबाउट मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विद एंथुजियाज्म. तो एंथुजियाज्म कहीं नहीं जाना चाहिए, तभी सक्सेस आएगा. आप फेल होते रहो लेकिन जोश से लगे रहो. सो दैट मीन्स इट हैज टू बी परमानेंट. नाउ हाउ डू यू गेट परमानेंट? द आंसर इज यू एक्ट enthusiastically until you make it a habit. We make this as a habit. It becomes part of our life. It cannot be like you hear a motivational speaker ko suna who shouts his lungs out, you get life only once and you must give it the best shot. Winners do not quit and quitters do not win. अब आप उस पर स्टैंडिंग ओवेशन देते हो, खूब कुछ बाहर निकलते हो, और थोड़ी देर में जब अब वो रियलिटी ऑफ लाइफ आती है तो योर मोटिवेशन गोज फॉर अ टॉस. Enthusiasm cannot be temporary. It cannot be need-based and hierarchical. It has to be eternal. You may do foolish things, but can still do them with enthusiasm. It must become our habit. Our enthusiasm must not be like a weather. कि गर्मी हुई तो बह गई पसीने में और सर्दी हुई तो फ्रीज हो गई. Now I'll narrate a few incidents that will make it slightly clearer. I had a CEO when I was working in one of the companies. I'll not take names. He was around 63 years old then, way back, 20 years back I am talking. He was 63 years old. Now we were हमारा प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और रोज रात को ऑफिस में लेट हो जाते थे. 8, 8:30, 9 बज गए और यंग मैनेजर्स वो फिर उठ के आते थे. दे यूज्ड टू प्लान समथिंग कि चलो लेट्स गो आउट फॉर डिनर. तो वो आके सीईओ को बोला सर चल रहा हो, एंड ही वुड से हाँ हाँ चलो. नाउ हिज फैमिली वाज आल्सो देयर.
right? He would go with them, enjoy with them for 15, 20, 30 minutes and say, यार अब मैं चलता हूँ वरना मेरा घर में गदर हो जाना. And he would, the manager, nobody minded it, right? He would enjoy with people even at 9 o'clock. He would be there with them and then 30, 40 minutes after having a drink, he would leave quietly, after enjoying with them. Now, projects में भी, अब project site पे जाते थे, young engineers used to get tired, but this gentleman 63 years old would stand अपने वहाँ अपने टर्बाइन इरेक्शन हो रहा है, रात को 11 बज गए 12 बज गए, and he would be there watching. और वो बीच बीच में अपने यार चाय ले आओ, सबको इकट्ठा कर लेंगे, नाश्ता भी हो रहा है, and then once again get back to work. रात को after the turbine is erected, he would go back to hotel again, वो सब इंजीनियर पकड़ के बैठा के, and then he would have dinner with them, और past midnight then we would retire to our rooms. और उसके बाद next day early morning we would go to the next site. How was he working like this? Same, अगली site पे भी जाएंगे तो same रवैया. How could he manage so much of energy? It was because of the enthusiasm in him. That was, that electricity was driving him. I'll give you another example. Now this is about कि उसमें electricity थी. I'll give you another example. I was a second lieutenant then, posted on line of control. तो एक पोस्ट थी जहाँ पे एक because I was a second lieutenant, तो एक फील्ड ऑफिसर यानी मेजर की परमानेंट रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ पे. So one मेजर वॉज पोजिशन देयर. तो एक छोटा सा बंकर था, वो पत्थर को बना हुआ था. मैं भी उसमें था. एक साइड में मेरी कैंप कॉट पड़ी थी, एक साइड में वो थे, और बीच में वो बुखारी, जो सर्दियों में क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई थी तो वो बुखारी जलती रहती थी, और एक छोटा सा लकड़ी का वो टेबल बना रखा था, तो उसके ऊपर टेलीफोन रखा था. ना देयर वाज, शाम को लास्ट लाइट के बाद, सनसेट के बाद, जो नॉर्म होता है हर यूनिट में कि शाम को जो है सीओ को, कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट देनी होती थी. तो शाम को जब वो रिपोर्ट दे रहे थे तो उनसे कुछ गलती हो गई होगी, तो सीओ ने उनकी खूब बुलशिट करी. ही बुलशिटेड हिम हेलो एंड आई कुड हियर टेलीफोन पे कि सीओ वाज गेटिंग एनॉयड ऑन हिम. And he kept, his cool, and he said, yes, sir. Right, sir. Yes, sir. And after almost 5 minutes of getting bullshitted, he said, right, sir. Okay, sir. Good night, sir. And he kept the phone down. And I was sitting and watching him, ke abhi kya hoga? He has got a good bloody bullshit from the CEO. And then after a while he said, good bullshit. Now, we need to learn to take everything, even this bullshit, in our strides and move on with enthusiasm and not get morose or gloomy कि अरे यार आज तो बहुत पड़ गई है, अगले दिन 2 दिन हफ्ते भर तक आप परेशान के क्या. नहीं, he got back to work after that and again doing his work with great enthusiasm. कोई जोश में कोई कमी नहीं. Look at the batsmen also, good batsmen. What do they do? एक बॉल पहले वो बीट हुए thoroughly, बॉलर ने उनको बीट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट बॉल अगेन ही इज फेसिंग, एंड मेनी बैट्समैन, यू फाइंड गुड बैट्समैन, वो अगली बॉल पे चौका भी मार देते. क्यों? क्योंकि वो एंथुसियाज्म में कमी नहीं आई है. ठीक है, बीट हुए, अगले ही पल बैक टू नॉर्मल. सो दिस मस्ट बिकम आवर हैबिट. नाउ वन कैन रिमेन इन हाई स्पिरिट्स प्रोवाइडेड ये हैबिट ही बन जाए, तभी हाई स्पिरिट में, तभी जोश में रहेंगे. जब तक ये हैबिट नहीं बनेगी हम जोश में नहीं रहेंगे. फॉर इंस्टेंस, आई गिव यू अनदर एग्जांपल. इन आर्मी वी हैव इन एवरी बैरक, जहाँ जवान रहते हैं, बाहर ही एक बड़ा सा फुल साइज मिरर लगा होता है, राइट, और उसमें ऊपर लिखा होता है एम आई लुकिंग स्मार्ट, सो दैट देयर इज एंथुजियाज्म इन इवन ड्रेसिंग अप. जवान वहां खड़े होके अपनी बेल्ट, अपनी टोपी, अपना चेहरा, अपना फिजिक देखता है, और ऊपर लिखा है एम आई लुकिंग स्मार्ट. अब वो इसलिए लिखा है कि ड्रेसिंग अप में भी जोश हो. ऐसा नहीं हो क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ भी पहन लो. नहीं, वी वॉन्ट एंथुजियाज्म, दैट जोश टू बी पार्ट ऑफ अ लाइफ. इट मस्ट बिकम आवर हैबिट.
Enthusiasm is one such electricity that manifests itself in many forms in our personality. It makes us passionate, creates excitement, gives us energy, makes us strong and determined, helps us to recognize, respect, and appreciate others. And most important, it keeps our minds always open to learning. शट नहीं करता है क्योंकि देयर इज एंथुजियाज्म इन एवरीथिंग दैट वी डू, उसमें हम जोश है. सो हेनरी फोर्ड हैड ऑल्सो वन सेड, एंथुजियाज्म इज द ईस्ट दैट मेक्स योर होप्स शाइन टू द स्टार्स. Enthusiasm is the sparkle in your eyes, the swing in your gait, the grip of your hand, the irresistible surge of will and energy to execute your ideas. अर्थात ये हर जगह ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी और ईस्ट है जो हर जगह से दिखाई देती है, आंखों में तेज आ जाता है, हमारी चाल में एक अलग स्विंग होता है. जब हम हाथ किसी का शेक करते हैं, शेक हैंड्स करते हैं, तो उसका जो ग्रिप होता है वो फर्म होता है, ना कि इतना सा छोटा सा हाथ दे दिया और देख कहीं और रहे हो. ये वो विल है जो इररेजिस्टिबल विल है, जो हमें ड्राइव देती है, जिससे हम अपने आइडियाज और अपने अपनी क्रिएटिविटी को रूप देते हैं. नाउ गेट दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड ईस्ट इन आवरसेल्व्स when meeting someone. हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने में. जैसे जब हम किसी से मिलते हैं, look straight into his eyes, shake hands warmly, welcome him cheerfully. ओहो आइए आइए, वेलकम, नमस्कार. एंड श्योरली नॉट दिस वे, ओ आप आइए यार, बैठिए, नमस्ते. So it must become part of our personality. Everything that we do, we must be projecting enthusiasm. Once we get this into our minds, that come what may, I will remain enthusiastic, then many advantages will accrue. We will become more caring and enjoy better relationships. हमारे रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे होंगे, क्योंकि हम जब मिलेंगे तो गर्मजोशी से मिलेंगे, ना कि मरे हुए बिल्कुल बुझे हुए से. वी विल बी कॉन्फिडेंट टू फेस चैलेंजेस, क्योंकि हमें जोश है. अब जो भी होगा देखी जाएगी. वी विल बिकम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, एंड फाइनली वी विल बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. But don't forget the most important part, we will have an open mind to learn and update ourselves. That will be the biggest thing that can happen to us, is कि हमारा माइंड हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि हम जोश में हैं और हम we are open, always open to learning. Right, gentlemen? For today, hope, enthusiasm और जोश हम अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में लाएंगे. थैंक यू. जय हिंद.